fragrances case, there is no discretion. They have to follow the machinery given in the act. Or now, if you see this A, B, C, there is no or after A, there is no or after B, and C. There are independent provisions. That is, if you read C, C comes after A, B, A, B. Upon furnishing a security equivalent to the amount payable under class A or class B in such form and manner as prescribed. That is, it is not mandatory for the officer to take cash. He can also take a security. That is also a right given to the taxpayer. That is, supposing your goods are detained or conveyed detained and you want them released. You don't want to follow clause A or clause B. Then you can say, I'm willing to give the security of the amount prescribed for A and B. Amount उतना रहेंगे. You can ask for a bank guarantee. Security तो लेंगे नहीं, bank guarantee लेंगे आप. Offer a bank guarantee. There also many high courts have held that once this option is exercised by the taxpayer, the officer has to reject it on sufficient grounds. Why is he not willing to accept a bank guarantee? Why does he want a cash? Right? So ये तीनों चीजें 129 में अवेलेबल हैं. तो अगर आप अपने गुड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या गोडाउन में रखें, when the goods are in transit, the proper officer has the power to detain the goods and shall be released on subject to subclause A, B, C. Owner of the goods आए तो वहां फर्क है, नहीं आता तो उसकी पेनल्टी ज्यादा होती है. और अगर कैश आप नहीं जमा कराना चाहते, you have to make a prayer. I am willing to exercise my right under subclause C to section 129(2), and therefore willing to give bank guarantee. Supposing order pass करते हैं जी आपको 10 लाख रुपए देने पेनल्टी के, you have to make statement immediately. Yes sir, I am willing to give bank guarantee for this. Let him reject. He has to pass an order. Against that order, you can move further. If no trouble, go to High Court. High Court will give you relief in this case. But if when amounts are very small, it's better to deposit and file appeal. Appeal वही फाइल होगी जहां आपका ट्रक डिटेन हुआ, उसी jurisdiction में अपील होगी. Now Supreme Court has made it very clear. And the इसके सर्कुलर भी आ गए इनके साथ. They are right. They are right. It is your duty to carry the documents now. नहीं तो हेल्पी ड्राइवर, इट्स योर एजेंट, नॉट देयर एजेंट. हाँ तो देन व्हाट? इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज योर प्रॉब्लम, नॉट देयर प्रॉब्लम. कन्वेंस तो आपने भेजी थी ना, तो आपकी ड्यूटी थी. कल को बोले ईमेल देना भूल गए, कल को बोले जी हमने 10,000 के गुड़ थे, हमने 10 लाख गलती से डाल दिए. ये गलतियां नहीं मानता कोई. It's a case to case. अपील करो, अपील करो, पेनल्टी वापस हो जाएगी आपकी. हाँ अभी आ रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर. केस है सर, ये फिजिकल फॉर्म्स में होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में जाएगा क्या? डॉक्यूमेंट्स. हाँ आजकल तो आरएफडी आता है ना, उसमें डॉक्यूमेंट चलते हैं ना. अब तो डॉक्यूमेंट कैन बी इन डिजिटल फॉर्म आल्सो नाउ. आरएफडी मैंडेटरी है ट्रकों पर. ये बिल्कुल झूठ है. ऐसा नहीं, ऐसा किसी अफसर का, इतने गंदे पैसे लेते हैं लेकिन इतने कमीने किस्म के अफसर नहीं है. आपने तो पूरी कमीनता की भी हद कर दी ना. उसको इतना नीचा गिरा दिया कि साले उसको हमने कुत्ता बना दिया कि पेपर खा गया हमारे. वो ऐसे इतने गंदे अफसर नहीं है. जो ड्राइवर झूठ बोल रहा है. ये हो सकता है ड्राइवर से मिसबिहेव ने. वो फिल्म देखी थी ना हमने, सिंघम अजय देवगन की पिक्चर देखी थी ना. आई रिमेम्बर दैट सीन. कहता है एफआईआर फाड़ दे, वो का गुंडा उसको बोलता है अरे ये कर देंगे, उसका बंदा है. वो एफआईआर खुद फाड़ देता है, तूने फाड़िया बा, तो इसे मार लगाओ उसको आप ड्राइवर को. ओके, सो दैट इज, if you cannot deposit cash, don't wish to deposit cash, you should make an application to invoke subclause C, and we are willing to give bank guarantee. If he rejects your offer, you have to go further. Otherwise, you have to follow and deposit cash. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था? के पैन फ्रेग्रेंसेस केस में वो जो भी रिट फाइल करता तो कहते हैं गुड्स रिलीज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो. तो जब यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई
उन्होंने कहा जी ये मशीनरी प्रोवाइडेड है, कैसे गुड्स रिलीज होने हैं, हाईकोर्ट तो पता नहीं क्या बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया, उन्होंने कहा कि दिस व्हाट इज बकवास, ये क्या रिट ऑर्डर है। उन्होंने नॉट ओनली क्वेश्चन ऑल द ऑर्डर्स दे हैड पास्ड, वो सारी रिट्स जो वहां पेंडिंग थी, जो अभी आर्ग्यू ही नहीं हुई थी, उनको भी क्वेश्चन कर दिया। आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा ऑर्डर पास नहीं हुआ। On petitions on which no orders were passed, they were filed before Allahabad High Court. They say all those writs are also disposed of. Go to the officer. Without hearing नहीं, मतलब वो भी फाइल ही हुई थी। They were in the pipeline. Pipeline. The writs were not even admitted. Hearing तो बाद में आती है। हिस्ट्री में पड़ी हुई थी। With all disposed of. They were so angry with this order of Allahabad High Court कि what is this? फिर तो तुमने एक्ट की धज्जियां उड़ा दी, एक्ट का आता है पावर आपको है ही नहीं, तो आप पावर एक्सरसाइज कर रहे हो। रिट रेमेडी कैन बी यूज्ड अंडर 3 circumstances बेसिकली, where there is a complete violation of natural justice without jurisdiction, or you violate a supreme court or high court jurisdictional high court judgment. इन 3 केस में रिट इज इजी टू मेंटेन, बाकी किसी में रिट मेंटेन नहीं होती। कॉल ऑफ द क्वेश्चन कैन बी रेज्ड बिफोर अथॉरिटीज, इनका रखा हुआ है। तभी तो रेलीगेट बैक करते हैं वो। देन हम लोग पैसे बनाने का रिट दाखिल करेंगे, ये रिमांड ही कराना था, तो फिर वहां रिट में आने की क्या जरूरत थी। नाउ द ऑफिसर विल बी वर्किंग विद वेंजेंस अगेंस्ट यू। हाईकोर्ट कहते हैं अब दिखाते हैं तुम्हारे को। सो दे सेड के फॉलो द मशीनरी। बाकी सारे मशीनरी प्रोविजन आई एम नॉट लाइक कम टू सेक्शन 30। 3, 4, 5, 6 आर मशीनरी प्रोविजन, 17 दिन 15 दिन, ये 3 महीने, आप खुद पढ़ लो उसको। Margin heading is confiscation of goods or conveyance and levy of penalty. Detention is a bilateral act. Confiscation is unilateral act. He says your truck is confiscated, your goods are confiscated. Either pay tax or do this. When we read these both sections, the initial reaction is that both operate on in the same territory. इसमें भी गुड्स रिलीज होते हैं, वहां भी होते हैं। बट गुजरात हाई कोर्ट इन द केस ऑफ सिनर्जी लिमिटेड, दे पास्ड ए 100-page जजमेंट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सेक्शन 129, 130 के दोनों के फील्ड इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। नाइदर सेक्शन 120 में क्या लिखा है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 130, 130 में वैसा कुछ नहीं लिखा। देयरफॉर बोथ आर इंडिपेंडेंट सेक्शन। लेट्स गो थ्रू 130, वेयर एनी पर्सन supplies or receives any goods in contravention of any of the provisions of this act or rules made thereunder with intent to evade payment of tax, does not account for any goods in which he is liable to pay tax under this act, supplies any goods liable to tax under this act without having applied for registration, contrary any of the provisions of this act or rules made thereunder with intent to evade payment of tax, uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in contravention of the provisions of this act or the rules made thereunder, unless the owner of the conveyance proves that it was sold you without his knowledge. Now you understand ये आपका क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे, तो you have to prove कि मेरी नॉलेज में चीज नहीं थी ये, लेकिन जैसे ड्यूटी कास्ट अपॉन यू टू एंश्योर डॉक्यूमेंट्स को, तो यहां भी अगर कुछ ऐसा अपील लेते हैं तो प्रूव आपको करना है। इफ यू आर डीलिंग विद सेक्शन 130, you use without the knowledge or connivance of the owner himself or the agent, if any, that all such goods or conveyance shall be liable to confiscation and the person shall be liable to penalty under section 122. इसमें दो इंपॉर्टेंट है। पहला है supplies or receives any goods in contravention of provisions of this act or rule made thereunder with intent to evade payment of tax. कब कन्फिस्केट कर सकते हैं कि मेरे यहां उनको 200 मोबाइल फोन मिल गए, I have received mobile phone from somewhere. If they have to confiscate, then the officer have to say that Mr. Verma had intent to evade tax. Now supposing I will reply, these phones are not mine, these phone of Dr. Rahul Kakkar, he is the importer, just kept on in my office for some temporary period. I don't deal in phones. So can I have an intent to evade tax? Answer is no. बस ये आपको उस टाइम पे लिख के देना है जब ये आपका सेक्शन 130 का नोटिस है कि आई हैव नो इंटेंशन ऑफ वेट टैक्स, आई डोंट डील इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, आई एम ए लॉयर और आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए प्रोफेशनल और आई एम ए सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आप करते हैं, मेरा इस धंधे से कोई लेना देना नहीं है. दीज गुड्स टू बिलोंग टू समबडी एल्स. नाउ सपोजिंग यू डोंट शो दिस, देन you are deemed to be owner of goods. Then intention to evade
payment of tax can be presumed and this will be virtually irrebuttable. अगर आपके नहीं है तो किसके हैं? 200 फोन रखे हैं आपने, या तो बोले मेरे स्टाफ के लिए, तो दिखाओ 200 बंदे हैं आपके पास काम करते हैं? ये बंदा तो एक पीएन है बीरू, और तुम्हारा कोई बंदा नहीं है, 200 फोन किस लिए रखे थे? डेली कलर चेंज करके लेके जाएंगे फोन आप? So this intention to evade payment of tax is a बेलगाम का घोड़ा phrase. The whole onus shifts upon the taxpayer to prove he did not have intention to evade payment of tax. They will write the goods which are unexplained, like unexplained cash credit, section 168. अब अगर उसको प्रूव नहीं करते तो क्या करेंगे आप? फिर तो गड़बड़ हो गया आपका सारा. So is the case here. Though there is no such provision, here they say कि अगर आप आपके पास सप्लाई करते हैं गुड्स या रिसीव करते हैं विद द, आपने गुड सप्लाई कर दी, अब वो कहते हैं कि वो डॉक्टर कक्कड़ ने मुझे माल भेजा, इनवाइस है, कहते हैं नहीं डिलीवरी चलान है. जब वो कार में लाए थे, नहीं मेरे बंदा कार उड़ा के ऊपर ले आया था. He is also involved in this. He gets into section 132 also, right? So जो भी सप्लाई रिसीव गुड्स हो जहां इंटेंशन टू evade पेमेंट टैक्स हो, the goods can be confiscated. This is a major ground. Does not account for any goods on which is liable to pay tax under this act. अब राहुल कक्कड़ ने 200 फोन मुझे भेज दिए, इसकी किताब में अकाउंट फॉर नहीं. This can be confiscated whether at my end or anywhere wherever is kept. कई लोग कहते हैं ना यार घर में माल रख लो, दुकान पे जगह नहीं, घर में रख लो. That is a serious matter. You cannot keep goods at any place which is not authorized, which is not intimated to authorities even for one day. Notwithstanding, you have 30 days time to leave, give amendment. That 30 days period has been defined by Supreme Court in many cases. What is this period? आपको इंटीमेशन देनी है 15 दिन 30 दिन जो भी अमेंडमेंट का टाइम है. इट डजंट मीन यू कैन स्टार्ट स्टोरिंग गुड्स विद इन 30 डेज. माल रखो बेचो, माल रखो बेचो, ऐसा कुछ नहीं है. Once you start using that particular place for storing the goods, you are under a mandate to inform them. मैंने कई लोगों को सुनता बार में, अरे वो 30 दिन का टाइम है यार, 25 दिन में जो करना करते रहो. हमारे बार में लोग बात करते हैं ऐसी. मैंने कहा अपने टेबल पर बड़ी बड़ी सुना है, मेरा 25 दिन है, माल बेचो रखो जो मर्जी करो, की फर्क पड़ता है. पर जिस दिन पकड़े जाओगे there will be a lot of problems. Therefore, once you use it, go down, inform them. Why wait for 30 days? Why get into an interpretation of law? If you're doing a clean deal, why the hell should we get into an interpretation of things? Supplies any good liable to tax and this act without having applied for registration. Now there are big issues here. A phrase says without having applied for registration. Supposing your registration is cancelled and you still supply goods, can we say without having applied for registration in that case? बोलो, मेरे को भी सिखाओ कुछ. तारदाराम जी बोलिए. The language used is supplies any goods without having applied for registration. I applied for registration, I am granted registration, my registration is cancelled retrospectively. Cancellation was not my act. Application is my act. Therefore, once you use the phrase without having applied for registration certificate, it means you never applied for registration certificate. You did not file any application. You are still supplying goods. Right? Again, you can supply goods without registration if you are below 40 lakhs. So whenever you do this in practice, we always advise our clients, we issue a letter. We are doing this business, we opened on this date, our taxable quantum has not gone up beyond 40 lakhs for this home. Therefore, we are not issuing a tax and not charging tax. लिख के भेजो, कोई आपका सामान नहीं पकड़ेगा. एक बार पकड़ेगा तो पैसे लेके छोड़ेगा, टैक्स जमा करा के छोड़ेगा. साथ एप्लीकेशन भेजो. So you are liable to apply registration under section 22 if you are not covered by any of the provisions of section 24. 24 में तो 40 लाख का चक्कर नहीं है, आपको करना ही करना है. ठीक है. तो अगर सेक्शन 24 का आपकी कोई भी चीज वायोलेट नहीं करते तो सेक्शन 22 में आपको 40 लाख की लिमिट है दिल्ली में. सर्विसेज का 20 लाख है. So if the goods are liable to be confiscated, if you're supplying goods, what does it mean? Supply any goods
There are no services here because services cannot be confiscated. You can confiscate what is physically available with you. You cannot confiscate Sridhar Verma's mind. इसका mind confiscate हो गया, बात खत्म. So without having applied for citizen certificate, ये केस है तो वो सारे गुड्स आपके confiscate होंगे. Contra means any of Provisions Act rule made under with intent to evade payment tax. So सब क्लॉज 1 में वेट टैक्स है, सब क्लॉज 4 में है इंटेंट टू वेट टैक्स नहीं है. uses any conveyance as a means of transport, uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in contravention of Business Act or rule made thereunder, unless the owner of the conveyance proves that it was yours used so and so. In all such 5 cases, such goods or conveyance shall be liable to be confiscated and shall be liable to penalty under section 22. Go back to section 122. ये सारे 21 पेनल्टीज हैं सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में. वन ए को छोड़ दें आप फिलहाल. 21 के बाद देखिए, he shall be liable to pay a penalty of 10,000 rupees or an amount equivalent to the tax evaded or tax collected or short deducted but not paid government tax so and so, short collected so and so, so and so, whichever is higher, that is a penalty. अगर टैक्स आपका 10 लाख का बनता है, पेनल्टी 10 लाख की लगेगी. और ऑल दीज वेरिएंट्स whichever is higher. So सेक्शन 130 में पेनल्टी नहीं लगती, पेनल्टी सेक्शन 122 में लगते हैं. ऑल दीज 5 covered by 122 subsection 1. So that's a huge. So unless you pay this penalty, your goods will not be released. And then if you don't come within a certain time, the goods will be auctioned to recover taxes or penalties, whatever. जो भी procedure है. Go back to section 130 again. Whenever confiscation of any goods, whenever confiscation of any goods or conveyance is authorized by this act, the officer adjudging it shall give to the owner of goods an option to pay in lieu of the confiscation such fine as the said officer thinks fit, provided that such fine leviable shall not exceed the market value of the goods confiscated, less the tax chargeable thereon. Such fine and penalty shall be not less than the penalty equivalent to 100% of the tax payable on such goods, provided also that where such any conveyance used in the carriage of goods or the owner of the conveyance shall be given an opportunity to pay in lieu of so and so. अब वो कहते हैं कि अगर आपने कन्फिस्केशन नहीं कराना तो आपको ये ऑप्शन है सब सेक्शन 2 में कि जो पेनल्टी लगाती है विद मैक्सिमम लिमिट्स लाइक दिस यू कैन पे, या योर ऑप्शन. वंस यू पे सच टैक्सेस देयर इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू यू. इट्स ऑल ओवर. बिकॉज़ फॉर claiming input tax credit you have to have a tax invoice, right? These tax you are paying. That's why in the rate cases we always advise हम DRC 03 फाइल नहीं करेंगे. उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन लेगा, उसका क्रेडिट कौन लेगा, कैसे लेंगे आप? इट इज ऑल्सो नॉट ए TDS. जब झगड़े पड़ेंगे, जब आप शुरू होंगे झगड़े, आपने 3B में ले लिया, कैन वी टेक इन 3B? नो, वी कैन नॉट. व्हाई नॉट? हमें क्या है, व्हाई नॉट? रीजन दो, मुझे सिखाओ. आपने 10 लाख रुपए टैक्स दिया, टैक्स तो दिया आपने, किस चीज का टैक्स दिया? किस चीज का आपको टैक्स दिया आपने? कोई उन्होंने आपको असेसमेंट की थी आपकी? यस, दिस टैक्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टैक्स लायबिलिटी, यू विल गेट क्रेडिट फॉर इट. इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता, तो नेवर से दैट टैक्स नहीं मिलता. स्विगी के केस बॉम्बे 40 पे इसी चीज पे लिखे थे कि किस बात पे टैक्स लिया आपने. यू नॉट कलेक्ट टैक्स अंटिल यू इशू डिमांड नोट. असेसमेंट तो हुई नहीं. उन्होंने कहा गुंजन शर्मा जा टैक्स दे, जा गोली खा, ये टैक्स ले लो, गोली मत मारो यार, मेरी नई शादी हुई है, मैं गोली को मार रहे हो मेरे को भी. जब हम टैक्स जमा कराएंगे तो
but DRC 03 के बिना what do you do? Whichever way, answer is कि will you get the benefit of tax from your liability or not? Answer is question is this. कैसे जमा कराते हैं वो अलग चीज है. हाँ, तो जो This is neither a fine nor a penalty. DRC 03 भरा लेगा वो. कुछ भी भरा ले. That's a form of चालान. अगर मैंने 10 लाख रुपया रेड केस में दिया इनको for what ABC reason, will I get the benefit or not? बेनिफिट तो मिलेगा. मैं सिर्फ बेनिफिट की बात कर रहा हूँ. Only thing is this cannot be subjected to input tax credit. हाँ राहुल क्या बोले थे? Sir, even in these matters initially of 129 and 130, wherever we were paying, initially the officers had a view that if your goods were confiscated, they used to ask you कि आप 50% tax जमा करा दें जो total amount disputed है और 50% interest में जमा करा दें या penalty में जमा करा दें. So 50% immediately आपको next month में 3 week में we used to advise our clients, and this was a view which was taken by a lot of other professionals also. They used to claim the input tax credit. Now officer are very specifically asking कि आप सारा का सारा amount, total amount penalty में pay करें. Penalty में pay करें. No, पहली बात तो input tax credit आप ले ही नहीं सकते. The only question is whether you could claim in 3B is a debatable issue. A tax, You cannot claim it in 3 weeks. तो हमारे कैश लेजर में नहीं से जाता. निकल जाएगा. मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको. तो but how will you get benefit? Benefit will happen once you are assessed in 73, 74 by way of operation of section 75. You can say कि इतना टैक्स मैंने already paid है. स्विगी केस में यही पॉइंट लिया गया था. उन्हें बोले 40 करोड़ हमारे से ले लिए. वो कहते हैं इनके हम फाइनल लायबिलिटी में एडजस्ट कर देंगे. The DGI conceded. तो हाई कोर्ट सेड व्हाई? किस बात का टैक्स लिया आपने? आपने कोई असेसमेंट की इनकी? गोली रख के टैक्स लिया है, वापस करो विद इंटरेस्ट. सुप्रीम कोर्ट SLP was dismissed without even hearing it. So what is this? 132 130 का तो सेक्शन 16 17 5 में ही बाहर है. इनपुट ले नहीं सकते. मैं इनपुट की बात नहीं कर रही. इनपुट तो कहता है इनपुट ले लेते हैं. नहीं लेते थे. पहले से ही बाहर है. बाहर है वो अलग बात है, लेते थे मैं बोल. टैक्स वाला हटा दिया. Has the provision been amended? मेरे ख्याल से सर नहीं अमेंडमेंट 1A है, ये फरवरी का है. 1A पढ़ी है, 129 मैंने पढ़ा नहीं उसको. ऐसा नोट रिक्वायर्ड. हाँ 122 में है. 1A ए पर्सन हु ट्रेन द बेनिफिट ऑफ ट्रांजैक्शन समझ एक अलग है. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ तो देन आई एम नॉट अवेयर. ये डिबेटेबल क्वेश्चन है सर कि इसका इनपुट मिलेगा क्या? इनपुट तो मैं टैक्स नहीं हाँ मिलता है. और इसका कोई डिबेट नहीं है. इसका मिलता है बेनिफिट. उसका कोई इशू नहीं है. मैं आई टॉकिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली. इनपुट तो मिल. No order of confiscation of goods or expenses shall be without giving person or opportunity being heard. Once you get an opportunity, you will come to know on what basis are they trying to confiscate your goods. If you have any material that your goods are not liable to be confiscation under these sections, give material. The only material is that you had intention to evade tax. You have to impress upon the authorities that we have had no intention to evade tax. Therefore, Section 130 proceedings are not invocable in our case. बोलो. The word tax and penalty have now been replaced only with penalty. कौन से प्रिजन में? We have an old book. हमने लेटेस्ट बुक बनवाए थे. ये शायद अभी अमेंडमेंट हुई है बस. फरवरी में ये ना पेनल्टी. हाँ ठीक है. ऑफ द टैक्स पेबल हम तो ये पढ़ रहे हैं. पेनल्टी. हाँ हम तो ये पढ़ रहे हैं. अर्लियर इट यूज्ड टू बी टैक्स. नहीं मैं तो हम तो ये पढ़ रहे हैं. हम पेनल्टी बोल रहे हैं ऑफ द टैक्स पेबल. पहले टैक्स जमा अच्छा था. ओके. पहले इनकम टैक्स में जमा कराता था. Okay. Now, supposing you are confronted with these two proceedings, what do? Again, the checklist which we gave tomorrow, you have the checklist. कि क्या प्रोपोजिशन आपके सामने है? क्या जी 129 की है, जी 130 की है? 130 में आपके जो 5 ग्राउंड हैं जहां वो कन्फिस्केशन कर सकता है. तो वॉट एवर रिप्लाई यू ड्राफ्ट, यू हैव टू फाइल रिप्लाई कि वी डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज. Why? Give reasons. And then tell the officer if we pray that the provisions, any of the provisions of section 130 is not invocable in this case. Therefore, you have no authority or jurisdiction to confiscate our goods. You have to take an alternative prayer. Alternatively, we are willing to the following.
as a process to ensure that you don't confiscate, subject to our rights under the act. That is section 107 की आप अपील कर सकते हैं. 129 में भी जो ये ग्राउंड हैं सबसेक्शन 1 और 2 के, उसमें आपको देखना है कि आपके कौन से ग्राउंड में आपके वो जो गुड और कन्वेंस गोडाउन में या इन ट्रांजिट में डिटेन करता है. अगर वो ग्राउंड नहीं बनता, आपका वो तो डिटेन करेगा, आपसे टैक्स मांगेगा, पेनल्टी मांगनी उसने, कोई चारा नहीं है आपके पास. बट अनलेस यू फाइल a reply there with him, appellate authority will not be bound by what you write, because उसके सामने एक ऑर्डर है. Right? Now let's go to 129.5 before we go further on this issue. That's the judgment we have, I think, one of the judgments here. Subsection 4, no penalty shall be determined under subsection 3 without giving the person concerned the opportunity of being heard. So अगर आपको बिना नोटिस पेनल्टी लगाई जाती है, this is a fit case to go to High Court. But High Court will only question and remand the matter. They give opportunity. 5, on payment of amount referred to in subsection 1, all proceedings with respect of the notice specified in section 3 shall be deemed to be concluded. ये कल मैं आपको बोल रहा था कि what is subsection 1, where you pray for release of detention order subject to the following, and who says deposit so much amount? The officer. Supposing without such requirement you simply deposit amount and tax or penalty जो भी आपका है, दोनों चीजें they fall on a different footing. First is where subsection 1 is invoked by the officer based on your application. He says कि उस केस में अगर आप करते हैं तो ये कहते हैं कि दो प्रोसीडिंग शैल बी कंक्लूडेड. इसका मतलब बताएंगे क्या मतलब है. लेकिन जहां आपने खुद ही जमा किया बिना किसी के, then there was no proceeding. That is your voluntary act. Nobody forced you to pay penalty. You deposited on your own. In that case, everything comes to an end. You cannot be aggrieved by your own voluntary act. तभी रेडी में ऑर्डर पास नहीं करते, वापसी पैसे जमा करवाते हैं. ऑर्डर तो ना पास करते हैं, कोई 10 लाख जमा करा दे, हम छोड़ देंगे. They don't ask you to pass any order, but that order will become appealable order. That's an order passed under this act, right? Now we are going to do three judgments of 129, 130. One of the judgments more critical is अगर subsection 1 में जो मुझे पेनल्टी लगाएगी मैंने जमा करा दी, what is the significance of subsection 5? Have all the proceedings been concluded? That is, there is no further appeal right with me. इसका मतलब यही निकलता है अगर आप सिंपली ये पढ़े, right? But section 107 is not subject to section 129. That gives you an unfettered right to appeal any order or decision passed under this act. Let's see. First thing, this is a good judgment. If you want to study more, read this judgment. Once the assessee opts to make payment in terms of clause A of section 1 of 29 CG Act to get the goods and conveyance detained or seized in possession of the act released, whether the assessee deprived of his right to file an appeal against the proceedings. In terms of subsection 5, all proceedings are going to be concluded. Concluded के बाद खत्म हो गई. अफसर ने बोला काहे की अपील भैया, खत्म बात, भाई जाओ अपने घर जाओ, ऐसे हमारे यहाँ. What does court say? Held. Rev contends that in terms of subsection 5 of 29, on payment of amounts under the one, shall all proceedings which are subject matter of notice under section 123 shall be deemed to be concluded. लिखा है. उसका इनिशियल इंटरप्रिटेशन जो नहीं निकलती है, और तो कोई इंटरप्रिटेशन निकलती नहीं उसकी, but court took a different view based on applicable rights. Whether or not a person ought to make payment under subsection 121 or to provide security under C, the responsibility of the officer has to pass an order of subsection 3 of section 29 and to upload a summary of the order demand in form so and so. The provisions of subsection 5 only contemplate that the procedure for detention or seizure of goods or documents or conveyances came to an end, and it is always open to person who suffers proceeding in section 129 to challenge those proceedings if he feels that demand has been illegally raised on him. This can be the only reasonable interpretation that can be placed on the provisions. Any other interpretation would clearly violate Article 265. Only due tax can be collected, tax or penalty or whatever you call. So the High Court said no. Only proceedings qua that release of detention order for goods or conveyances or stores in Godon
only those proceedings come to an end. So what are the proceedings of section 129? These are the only proceedings. They come to an end, not your appeal right. या पैसे भी खा जो सारे आप. अब ट्रक खड़े हैं, उसके 10 ट्रक खड़े हैं पेट्रोल वाले के, उसके अलग पेट्रोल लोग चोरी करके ले जाएंगे, यहाँ बचेंगे कुछ नहीं. स्टील खड़ा है, स्टील उठा के ले जाएंगे. हमारे साथ हुआ था एक बारी, रिलायंस में हम लोग डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का पावर प्लांट बना रहे थे. कोई एंटी टैक्स का इश्यू था वेस्ट बंगाल में, तो हमें अनिल अंबानी ने बोला इसको चैलेंज करो कलकत्ता हाईकोर्ट में. वी फाइल्ड अ रिट. वो रिट में 15 दिन की डेट लग गई. जैसे इंद्रानी बनर्जी वाज द टैक्स बेंच, शी सेड आई विल हियर आफ्टर 15 days एंड वी विल नॉट गिव एनी स्टे. हम भी मस्त हो गए. आफ्टर 10 days आएंगे, वो जो सीमेंट आया था, वहां सीमेंट ट्रक में सीमेंट ही नहीं था, लोग चोरी करके ले गए. तो हमने रिपोर्ट दी कह दिया अब वो हाईकोर्ट में जो होगा तो माल ही नहीं है जी, सब चोरी करके ले गए लोग. वो आज तक अभी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला हमारे को. 7 साल हो गए आज, अभी झगड़ा चल रहा है. तो देयरफॉर पर फोर्स आप माल सीज कर दो बाद में. So therefore the court said this is the only reasonable interpretation. Any other interpretation will violate Article 265. You are depriving an assessee of his property, which is cash which you have taken. Next, आगे पढ़ते हैं इसको थोड़ा समझने के लिए. Further, 107 is widely worded and provides that any person aggrieved by any decision or order passed in this act by an adjudicant authority may appeal to such appellate authority. A person who is the subject matter proceeding section so and so has the right to challenge those proceedings culminating in an order under subsection 3 of section 129 before the duly constituted appellate authority in section 107. The fact that the culmination of respect of a person who seeks to make payment of penalty tax and penalty under section 129(1)(8) does not result in generation of a summary of an order under GRC 07. Order नहीं निकालते थे, ये पोर्टल में अब है, पहले पोर्टल में ये प्रोविजन ही नहीं था. Cannot result in right of person to file an appeal in a section by being deprived. Now we come to your question कि पोर्टल अपील नहीं लेता, यहां भी नहीं लेते थे. कहते डीएस बनता ही नहीं इसका, तो प्रोसीडिंग खत्म होगी. आप होता है कोर्ट का शुरू करो. The fact that a system does not generate a demand or that the system does not contemplate the filing of an appeal without a demand does not mean that the intention of legislature was different. Commission office so and so will issue an appropriate circular taking note of the finding it petition to stand allowed. ने बोला कि तुम्हारे अपील करने का राइट नहीं है, ऑर्डर पास करने, मतलब पैसे खाते सारे बंदे के लीगल जो भी आपने लिया आपको तो अपील करने का राइट नहीं है. उन्होंने बोला जो भी करना आप सारा ठीक ठाक करो, इसको इसकी अपील राइट बनती. नेक्स्ट, ई-वे बिल. Though I don't know much about e-way bill, but I have read the law on this. I have no idea how this e-way is generated. Levy of tax and penalty on the ground the petitioner transporter on being intercepted was found to carry goods to petitioner office at Jabalpur, whereas e-way bill generated showed destination at Indore. This is a huge violation. Okay, Jabalpur या इंदौर जा रहे थे, but that itself doesn't mean that the penalty has to be levied. There has to be justification. Why were you deviating from a route? What were the reasons? Petitioner submit that Indore address is the default address in the online option and same could not be manually changed due to inadvertence during generation of e-bill. E-way bill जो आप जनरेट करते हैं, जो आपको ऑटो एड्रेस है वही आता है उसके ऊपर. Am I right? Supposing आपके 4 ब्रांचेस ऑफिस हैं तो सबके एड्रेस तो नहीं आएंगे आपके पास. But I think नीचे पढ़ के सीखा है मैंने. नेक्स्ट, आगे चले. हेल्ड कोर्ट कहता है अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ले तो बात सही है, पेनल्टी लगनी चाहिए. बट कोर्ट इंटरप्रेटेड द लॉ कि कुड द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर बी दिस कि अगर ये रूट में आपने एड्रेस गलत लिख दिया आप उसको ठोक दो पकड़ के अच्छी तरह. नो, strictly going by the terminology used in the immunity provision under clause 5 of CB circular so and so, the benefit flowing wherefrom may not be available to the petitioner. However, in penal provisions such as 129, the element of intention to evade tax must be present to sustain an order of penalty. They are using subclause A where intent to evade taxes. There are only 2 subclauses used word intent to evade tax. To gather the intention of the petitioner, an inquiry has to be undertaken to ascertain whether the mistake was inadvertent with intent to evade tax. Neither the taxing authority or the authority has undertaken the demand.
So simply because there are some mistakes in variable generation or the destinations are shown differently does not automatically lead to the conclusion there is an intention to evade tax. Somebody has to give a finding based on circumstances, factual matrix that there was an intention to evade tax. Only then you can invoke section 129, especially those clauses which are followed by the words with intent to evade payment of tax. बाकी में तो ऑटोमेटिक होगा. नेक्स्ट, अब अगली जजमेंट देखो वो क्या कहती है. Observing certain discrepancy in goods were detained and consequential notice and so issued. Although the assessee submitted a reply, but immediately thereafter on his own deposited a sum demanding his notice under 129(3). Through this petition, assessee seeks direction to the respondent to make available the copy of the past under section 123 and past consequential orders so and so after affording an opportunity being hearing next. Once the proceeding respect of notice was issued, concluding some segment read so and so, no direction can be issued to respondent to pass an order on segment 3 since the matter is concluded as per legislative mandate. The content petition that a copy of the order section so be provided to him is wholly muscular. अब इसमें उन्होंने सब डिसमिस कर दिया, उसने विदाउट एनी चैलेंज पैसे जमा करा दी. पहली जज में क्या कहती थी, ऑर्डर पास करना है, अब दूसरी कहती है नहीं करना है. बट फर्स्ट वन इंटरप्रेटेड आर्टिकल 265. This did not interpret Article 265. So when you have to file an appeal when you confront contradictory judgments, follow the one that has interpreted the issue in a larger context, for or against, not favorable. We are not here for favorable judgments. Where issue has been interpreted in a bigger way. तो पहली वाली में 265 को उन्होंने चार पैरे लिखे थे. You cannot keep a tax what is not due to you. Next. 130. ये बहुत अच्छी जजमेंट है, अगर आप टाइम मिले पढ़िए आप इसको. पिटिशनर सीकिंग प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स. आप खाली हो गए सुप्रीम कोर्ट से, डेट लिया है? मेरे केस में डेट उसने दी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट ने. अच्छा, वर्मा जी को बाद में देखेंगे. Section 130 of CGST Act, petitioner seeking provisional release of goods and the conveyance pending adjudication pursuant to 130. Revenue stand that the provisions of Section 130 Act do not provide for any such contingency, and it is only after the proceedings are completed can the question of redeeming of goods and payment of fine in lieu of confiscation be considered. वो कहते हैं जो सेक्शन 129 में लिखा है 21 में कि you can seek release order, सेक्शन 130 में प्रोविजन ही नहीं है, हम कैसे रिलीज करें? ऐसे जैसे हम अगली साइड में देखें, कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है? There can be no provision in any act like this where you detain goods and don't release, even though the machinery is not given. Under section 129, not section 130. However, that question need to be gone into this petition as the notice 120 was issued only after physical verification. उनके पास पूरी एविडेंस थी, जो आपने चोरी चकारी की है, पूरी फिजिकल वेरिफिकेशन थी आपके पास. Therefore, the prayer to quash show cause notice is rejected. उन्होंने कहा सारी एविडेंस है कि आपने क्या क्या रेफरी किए है, क्या क्या आपने सप्लाई गुड्स किए हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन और विदाउट बिल और व्हाटएवर. इंटेंशन टू evade tax is established. Therefore, show cause notice cannot be quashed, and your prayer to quash show cause notice is therefore rejected. Though the learned senior government pleader has referred to the judgment of Supreme Court in Lexus 7, the said proceeding has no application in deciding a matter arising under section 130 of CGST Act. कस्टम एक्ट में प्रोविजन था कि आप गुड्स रिलीज कर ही नहीं सकते, एब्सोल्यूट पावर. उन्होंने कहा ये जजमेंट यहां लागू नहीं हो सकती. देयर इज नो सच एब्सोल्यूट पावर इन CGST Act where you are divest the proper officer from releasing the goods. The said case dealt with the provision of Customs Act. Under the provision of Customs Act, confiscation may be absolute if the goods in question are prohibited goods within the meaning of custom law. In the case of domestic transaction, like that in the present case, the question of ordering on absolute confiscation does not arise, as even the provision do not contemplate such course. There is no provision in section 130 which prohibits the interim release of goods. So what does it mean? If you want to take a shelter, I cannot release the goods, there has to be a power under the act authorizing the proper officer not to release goods. In the absence of such exclusive specific power bestowed on the proper officer under the provision of a particular section, the High Court says this power is presumed. Interim order, you can release the goods.
तो उन्होंने सेक्शन 129 130 को यहां फिर एक्सप्लेन किया, फॉलोइंग सिनर्जी केस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। इन दोनों का मतलब क्या है? दोनों दे ऑपरेट ऑन ए सेम पैरेलल। वहां आपके ट्रांसपोर्ट इन ट्रांजिट डिटेंशन है या फिजिकल डिटेंशन है, फर्क इतना ही है सिर्फ। There is no provision section 130 which prohibits the interim release of goods which are detained pending finalization of preceding sentence. The state can insist on conditions being imposed to ensure that his revenue is protected. The petitioner is entitled to an order directing the release of goods pending adjudication or show cause notice. The goods then conveyance shall be released to the petitioner on the petitioner depositing a sum of 1 lakh and furnishing a simple bond for the balance amount that it petitioner disposed of. So this judgment gives us two lessons. First, we need to know how to read a provision where you are seeking an interim prayer. For example, I remember in one of the cases in this tribunal, Delhi tribunal, 6-7 साल पहले की बात है, बब्बर साहब को शायद इसका पता है, हमारा केस रिमांड हुआ, हमने उसकी अपील की। अब रिमांड को करने की लिमिटेशन थी 23(7) में, दिल्ली सेल टैक्स एक्ट में। बब्बर साहब, हेठा जाना है ना, तो हेठा जाना है ना, है मन याद तो आज के बैठे उन्हें चलने बाद 5 मिनट बाद चल रहे हैं। सो देयर वाज ए पीरियड विद इन विच द ऑर्डर वाज टू बी पास्ड। अब उन्होंने एक इंटरिम स्टे मांगा कि भी ये सारी प्रोसीडिंग नीचे हॉल्ट की जाए। तो भारत भूषण जी थे, कहते वर्मा जी बोलो। मैं कहा जी आपके कोर्ट थोड़ी ना, सीपीसी में कोर्ट को पावर है, आपको तो ये पावर ही नहीं है ऐसे इंटरिम स्टे करने की, कोर्ट के ऑर्डर होते हैं। यू आर नॉट ए कोर्ट। ही रिफ्यूज्ड। बट वंस यू रीड दीस काइंड ऑफ जजमेंट्स डीलिंग विद गुड्स, व्हाट है नहीं, उन्होंने कहा था आई हैव ऑल दी ट्रैम्पलिंग्स। वो कथा सवारी के केस में कहा था, वो कथा सवारी के केस में कहा था, नहीं श्री अग्रवाल ट्रेड में आपका केस रेफर किया था उसने, वो 30 में था। मैं यहाँ की बात कर रहा हूं भैया। हमारे ट्रिब्यूनल तो बुधवार के वीरवार को बदल जाते हैं। नहीं, ये बदलेगा, बदलना पड़ेगा इसको। सो वेयर यू आर डीलिंग विद confiscation of goods with the revenue held, there is no power, there is no discretion for us to release goods till you conclude the proceedings. Court said no, you can finalize the proceedings but pass an interim order and release the goods subject to such conditions. Here court ने खुद condition लगा दी। Right or wrong, we are not going to the next judgment. I think we'll do the last one. Yeah, this is a very funny order but it's a good order. I think this is the last one. फेसबुक में किसी ने पोस्टिंग की कि जी मैंने ये इवेंट किया, मैंने इतने बंदों ने अटेंड किया, बड़ा सक्सेसफुल था, आप हमारे से कांटेक्ट करो। तो किसी अफसर ने उस फेसबुक को उठाकर उसको टैक्स लगा दिया। अरे बड़ा खुश हो रहा है सोशल मीडिया पर, नो सफर द पेन। इट्स अ लेटेस्ट केस ऑफ 2022। पासिंग ऑफ असेसमेंट ऑर्डर based on Facebook details and social media postings. Petitioner is engaged in business of event. SSC submits that without any event being conducted by the petitioner, the respondent passed assessment order confirming GST held. And the assessment order came to be passed by respondent basing on Facebook details and social media postings. A perusal of the order impugned prima facie show that the authorities gathered information from the platform of the petitioner, which is used for promotion of business, and basing on that GST was assessed. In view of the above, prima facie, it cannot be said that the petitioner has not conducted any business. Writ petition is dismissed, giving liberty petitioner appellate authority. Appeal karo. So what does it mean? It means once you start using technology, either for yourself or for revenue, it has no end. Supposing I write on a media, okay, I'm so happy that I have conducted my 100th seminar with a fee of 1 lakh rupees per seminar. So can I deny tomorrow? I have not charged 1 lakh rupees. मैं लिखूंगा झूठ लिखा था, ऐसी बेकार लिखी थी बात। हाँ, मैं भी तो यही, कोर्ट ने भी यही कहा है। तो कोर्ट ने यही कहा है। कोर्ट ने कहा रिट नहीं कर रहे आप अपील में, जवाब ने किया जब वहां जाकर वी आर नॉट ए कोर्ट ऑफ अपील। Well, thank you so much. We have 2.5 hour session, big session today. Thank you so much. नहीं आप हैं सर, ये बिगिनर्स के लिए, आपके लिए वो टेबल नीचे। He is experiencing some